channel. Today we will be learning about remainder theorem. Actually, दो theorems हैं. Theorems in the sense there are statements and they are basically calculus problems. Calculus problems in the sense जैसे आपको ज्योमेट्री में theorems होते हैं वो लॉजिक बेस्ड रहते हैं और ऑब्जर्वेशन बेस्ड रहते हैं कि आपका एक ज्योमेट्रिक फिगर है उसके हिसाब से theorem है. इसमें आपको दो पॉलिनॉमियल्स है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसके हिसाब से एक theorem है. What is it? I will tell you. First is remainder theorem. Remainder theorem आपका पहली बात तो डिवीजन का सब्स्टिट्यूट है. दूसरा आपका डिवीजन रिलेटेड है और वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल कि आपको डिटरमाइन करना है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल क्या आएगा. लेट मी जस्ट रिमाइंड यू और जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. आपको एक्सरसाइज का ही एग्जांपल दे देता हूँ. प्रैक्टिस सेट 3.5 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है वो आपके वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल पे बेस्ड है. वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल पे बेस्ड है मतलब क्या है कि आपने प्रीवियस लेक्चर जो अटेंड किया, प्रीवियस एक्सरसाइज जो सॉल्व की उसी के ऊपर बेस्ड है. सो मैं आपको उसके 2 क्वेश्चंस करा के दिखाता हूँ और फिर बाद में आपको बताता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट इज फॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल 2x स्क्वायर 2x आपका पॉलिनॉमियल है 2x माइनस 2x क्यूब plus 7. Find the value using the given value of x. आपको एक बार दिया है x is equal to 3, दूसरी बार है x is equal to -1 और तीसरी बार दिया हुआ है x is equal to 0. So I will be solving 2 sums या फिर एक ही समझ लो. मैं समझो आपको -1 वाला करके दिखा देता हूँ. For x is equal to x is equal to -1, p of -1 will be what? 2 into -1 minus 2 into -1 the whole cube plus 7. Now we all know the square of negative number is the square of negative number is positive and a cube of negative number is negative. 2 into -1 will be -2. The -2 into -1 -1 का क्यूब will be equal to -1 -2 into -1 plus 2 and then there will be plus 7 here. Plus 2 and -2 gets cancelled. Your answer will be 7. So for x is equal to -1, p of -1 is equal to 7. That is for the value of x is equal to -1, value of the polynomial will be plus 7. Next we will move on to the second question. Second question में you have certain integers. आपको polynomials अलग अलग दिए हैं. You have p of 1, p of 0 and p of -2. That is आपको कोई भी polynomial हो आपको p of 1 पे, p of 0 पे, p of -2 पे क्या वैल्यू आ रही है वो दिखाना है. So I will solve the third one. The rest of it will be homework for you. Third one is our third question is p of x is equals to x raised to 4 minus 2x square minus x. So here first you will find out the value when it's x is equal to 1, which will be 1 raised to 4 minus 2 into 1 raised square minus 1. 1 का पावर कितना भी हो आपका आंसर क्या आने वाला है हमेशा 1. 1 का स्क्वायर 1 minus 2 into 1 minus 2 minus 1. 1 and -1 gets cancelled. Answer will be -2. Next you have p of 0, which will be 0 raised to 4 minus 2 into 0 square minus 0. Everything is 0, तो आंसर भी क्या आने वाला है 0. Next is p of -2, a bit tricky one. -2 raised to 4 minus 2 into -2 raised to 2 minus of -2. Now again
आपको कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, पर अगर पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा. सो स्टार्टिंग हियर -2 into -2 into -2 into -2. Minus into minus gives plus, 2 2s are 4. Again here minus into minus gives plus, 2 2s are 4, which will be 4 4s are 16. तो आपको इसका आंसर आएगा 16. Here you have -2 into -2 into -2. This will be equal to 4 into -2, which will give you -8. So here it will be 16 minus 8, minus into minus, plus 16 minus 8 plus 2. 16 minus 8 is 8. 8 plus 2 will be 10. So take a good look at this one. और पीछे आप रिवाइंड करके पहले क्वेश्चन का सम भी देख सकते हो. These are very easy to solve. पिछले लेक्चर और पिछले एक्सरसाइज के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. So take a good look at this one and then we'll move on to the next sum. Third question. It's given that if the value of polynomial m cube plus 2m plus a, this is your given polynomial p of m is equal to m cube plus 2m plus a, is 12 for m is equal to 2. मतलब आपको दिया हुआ है कि m is equal to 2 पे इसका वैल्यू 12 आएगा, which implies what? That p of 2 is equal to how much? 12. The value of polynomial m cube plus 2m plus a when m is equal to 2 is 12. Next, then find the value of a. You have to find out a is equal to how much. Starting to solve, p of m is equal to m cube plus 2m plus a, but p of 2 is how much? 12. Therefore p of 2 is equal to 2 raised to 3 plus 2 into 2 plus a. P of 2 is how much? 12. 2 cube, 2 2s are 4, 4 2s are 8, plus 2 into 2, 4 plus a. 8 plus 4, 12. 12 is equal to 12 plus a. Plus 12 goes here, minus. This will be 12 minus 12 is equal to a. Therefore, your a will be equal to 0. मतलब आपको एक आंसर क्या आएगा? 0. Take a good look at this one. Then you have the fourth question. Fourth question is similar. I will just explain it to you. आप घर पे कर लेना उसको. For fourth question you have, for the polynomial mx cube, p of x, for the polynomial mx square minus 2x plus 3, p of minus 1 is equal to 7. You have to find out m is equal to how much. Again आपको बस थोड़ा सा लैंग्वेज अलग करके दिया है. यू आर गिवन p of x is equal to mx square minus 2x plus 3. आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है. आपको ये दिया है कि इस पॉलिनोमियल का जब x minus 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर 7 आएगा. दैट इज फॉर द वैल्यू ऑफ x is equal to -1, when x is equal to -1 the whole polynomial will be equal to 7. अब whole polynomial 7 आएगा तो आपको बस इसमें m है जो अनआइडेंटिफाइड रहेगा या कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो आपको बस सब्स्टिट्यूट करके वो फाइंड आउट करना है जैसा अभी पिछला सम हुआ था. सो टिल ट्राई इट एट होम एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क अस इन द कमेंट्स और व्हाट्सएप सेक्शन. वी विल मूव ऑन टू द रिमाइंडर थ्योरम पार्ट. So now we move on to the fifth question. Divide the first polynomial by second and find the remainder using remainder theorem. Now we are on the more important part of this exercise or this lecture. Fifth question. इसमें से हम solve करेंगे second and third. So second question is 2x cube
minus 2x square plus ax minus a divided by x minus a. अब फॉर सिंथेटिक डिवीजन आप क्या करते थे, इसको इंडेक्स फॉर्म में लेते थे एंड देन यू यूज्ड टू राइट द कोएफिशिएंट्स. सिमिलरली हियर, बट ओनली सिमिलैरिटी इज दैट यहाँ पे क्या है x माइनस ए. इन सिंथेटिक डिवीजन आप जो छोटा पॉलिनोमियल रहता था उसका लास्ट साइड का ऑपोजिट लेते थे. माइनस ए रहता था तो प्लस ए लेते थे, प्लस 1 था तो माइनस 1, माइनस 3 रहता था तो प्लस 3, प्लस 3 रहता था तो माइनस 3. सो सिमिलरली हियर let p of x is equal to 2x cube minus 2x square plus ax minus a. Opposite of minus a is plus a. Therefore, by remainder theorem, P of A, आप इसका अपोजिट इस पॉलिनोमियल में लोगे और फाइंड आउट करोगे आपको वैल्यू क्या आ रहा है. दैट इज 2 इंटू ए क्यूब माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए माइनस ए. दिस विल गिव यू 2a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर minus a. Minus 2a square plus a square will be minus a square. 2a cube minus a square minus a. आपको यही आंसर आया, 2a cube minus a square minus a. This is an algebraic expression, so आपको आंसर कॉम्प्लिकेटेड आया. दूसरा जो सम है उसमें आंसर सिंपल आएगा. Therefore, remainder is equal to 2a cube minus a square minus a. Take a good look at this one और फिर मैं आपको थर्ड सम बताऊंगा जो इससे ज़्यादा इजी है. So the third question of the fifth sum. Third question is 54m cube, a bit tough calculation. 54m cube plus 18m square minus 27m plus 5 divided by m minus 3. Again, let p of m is equals to 54m cube plus 18m square minus 27m plus 5. आपने पॉलिनोमियल अज्यूम कर लिया. ऑपोजिट ऑफ minus 3 is plus 3. Therefore, p of 3, sorry, by remainder theorem, my mistake, p of 3 is equal to how much? 54 into 3 cube plus 18 into 3 square minus 27 into 3 plus 5. Let's start the calculation. 54 into 3 3s are 9, 9 3s are 27 plus 18 into 3 3s are 9 minus 27 into 3 is 81 plus 5. Now 54 into 27, 54 into 27, 2 into 27 into 27, which will be equal to 729, 729 into 2, which will give you 1458. This gives you 1458 plus 18 nines are 9 nines are is 81. 81 into 2, 162 plus 162 minus 81 plus 5.
162 minus 81 gives you 81. 1458 plus 81 plus 5. This will give you 8 plus 1 9. 9 plus 5 gives you 10 11 12 13 14. Then 5 6 plus 8 14. Again 4 5 1 5 4 4. Tough calculation. Again आपको complicated answer आया. So try the first sum for homework. First sum बहुत easy है. +1 -1 पर भी base है. Take a good look at this one and then we'll move on to the last sum of today, the sixth sum. And in the next part we'll solve the factor theorem. Next, the sixth question you have is, if the polynomial y cube minus 5y squared plus 7y plus 7m, let's take it p of y is equals to y cube minus 5y squared plus 7y plus m is divided by y plus 2. इस पॉलिनोमियल को y plus 2 से डिवाइड किया गया है और रिमाइंडर आ रहा है 50. Remainder is equal to 50. You have to find out that what is the value of this last m, which is a constant in y's polynomial. Take a good look at this one. आपको p of y दिया हुआ है जो पॉलिनोमियल है y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m, जिसको y प्लस 2 से डिवाइड किया गया है. y प्लस 2 से डिवाइड किया गया है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 50. मतलब क्या है कि अगर आप रिमाइंडर थ्योरम लगाओगे तो आपको रिमाइंडर की वैल्यू पता है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू निकालनी. Therefore by remainder theorem p of plus 2 का opposite -2. p of -2 is equals to -2 the whole cube minus 5 into -2 the whole square plus 7 into -2 plus m. p of -2 is how much? Remainder कितना है? 50. -2 cube is -8. -2 square is +4. 5 4s are 20 और ये बाहर वाला माइनस plus 7 into -2 -14 plus m. This is how much? -28 -14 -28 -14 plus m. 8 plus 4 12 2 3 4 -42 plus m 50 50. -42 goes on this side, becomes plus 42. 50 plus 42 is equal to m. Therefore m is how much? 92. So your constant m has value 92. ये आपके रिमाइंडर थ्योरम के सम्स थे. अभी जो बाकी के सम्स होंगे वो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है और एक ही सम है जो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है. So till then, take care, stay home, stay safe, and wait for the next part, that is the factor theorem, and next part of practice set 3.5.